Welcome to Vanik Smart Class. This is your third class on OCS English compulsory paper. We'll just focus on translations. Some students came to me and told me that sir, questions translation was as difficult as it could be. Do you think so? One thing I need to tell you before doing the translation, that don't go by the sentence. Okay, sometimes you must have seen there are some words that are not regularly used by us, like apratyasita. So these are just literary words, but they have a genuine meaning. They have a genuine meaning. So suppose I am giving you example, we will discuss detail. I have done also the translation, I will write here, don't worry about that. But first, keep it out from your mind that it's a difficult translation, not difficult translation. Only the words are too much of literary sense. So you can say they are ornamental words. Give an example, I am giving an example, that is apratyasita. So it is a very common word we use, that unexpected things. That means, जोटा आमे भाबी नथा, मु भाबी नथली कथाटा हैला. तो एमती रेगुलरली आमे कहूची बे कथा उरा. तो सेटा को आमे से जो वर्ड टा आसुची आमे से वर्ड टा बुझिया चेष्टा करनु बेली हम भाबुची कि ट्रांसलेशन कष्ट हो गेला. But nothing is difficult. Okay, we have to just understand the word. एवं ओडिया रे किछि वर्ड आमे बुझी पारुने सेटा गोटे अलग कथा. बट तार गोटे कॉमन ट्रांसलेशन भी थिबो. धरा जो अप्रत्याशित माने जहा को आशा करा जाई नथाय. तो आशा करा जाई नथार बहुत इंग्लिश तुमे जानिथिबो. एक्सीडेंटल, अनएक्सपेक्टेड, unanticipated, unforeseen, केते वर्ड आसला जाननो एरा सब समस्त आज यू आर appearing for civil service examination. The lot of words might be there, but try to understand this. So अप्रत्याशित सेंते आउटे थिला हम देखिबा अंजुळाय सुख. तो तुमे अंजुळाय सुख रो गोटे कोन गोटे आसीबो, किंतु अंजुळाय माने कोन, हाथ तो कोन, हाथ राव कोन आसीबो, palm full of, hand full of, हला नि ताको हम कहूछु अंजुळाय. Ita हमको it looks like difficult because we are not conversant with Odia words as it is the trend now. So we are going away from our mother tongue and we remember more English word than Odia words. That is the only reason. So before doing or before going to attend the question, keep away from your mind that the translation is difficult. You must keep it in mind that it is as easy as other questions. This is the first thing you have to remember. So wash it away from your mind that this is a difficult translation. First thing, okay? Got it? Second thing, translation is a subjective matter. Because the translation you do on this passage will be different from what I do on this passage. Are you getting my point or not? So OPSC might have its own answer. But if your answer, if you write it perfectly or in a proper, that does not mean that word to word match will be there. OPSC जा करते हमें सही translation कले 40 मिलियन और मिलियन. समझते नहीं? Your translation तुम्हें suppose जंती ये word ना कोई अप्रत्याशित रा बहुत ही परे धर्म लेखिले unexpected. कितने word हो देख? Unexpected, unanticipated. Okay, unanticipated, unforeseen, okay, unforeseen, केते तीनटा वर्ड आसले. तो ओपीएससी एटा लिखतिबो, मु एटा लिखिली, से तुमे एटा लिखलो. असुविधा का हो? कुछ असुविधा होबनी? Nothing will be there, no problem. But you have to signify the meaning of the word, establish the meaning. Okay, so translation is quite subjective in nature. Your translation will be different from the horse, or her translation will be different from theirs. That is the second thing you have to keep in mind. So do translation at your ease. Jette comfortably, halka bhabare nei ki ta kariya padibo. One thing. Second thing, that you have to third thing, you have to understand the gist of the sentence. What does the sentence intend to say or convey the message? Every sentence sends a message to us. We have to understand the underlying message and accordingly convert them into the
into the English language or Odia language. In Odia paper, you must have found retranslation. So retranslation is that retranslation means not that exact translation. You have to translate according to the passage, and must your passage at the end must have the meaning. जमती एटा को मु ट्रांसलेशन करिवि ये जहा कहउचे जने इंग्लिश लोक पढिबो से सेटा बुझिबो जमती नला और ट्रांसलेशन मीनिंग कोन रहिबो. आर यू गेटिंग माय पॉइंट ऑन दैट? ओके. सो जदि धर मल्ला चाउल तो कहबो डेड राइस ताल सेटा प्रॉब्लम हे गेला ना. तो ताई चाउल केन मरिबो. So that has a different meaning, different approach रहिबो विभिन्न जगह रे मल्ला मनीष मल्ला चाउल मल्ला गच्छ. So that will be something different words are used. सेही हिसाब रे हमको एटा को बुझियाउ पड़िबो. सो फर्स्ट पैसेज टा गुटी पढि देबा दरकार. ओके. तापरे तारो जनरल सेंस कोन अरे कोन कहूची तापरे हमें ट्रांसलेशन वर्ड को जाई परिबो. ओके. सो आई हैव ट्राइड माय बेस्ट, आई हैव ट्राइड माय बेस्ट because Banik is such an institution which does not leave any stone unturned to help you out. So this is our endeavor to help you out and to suggest you, to help you how you will be able to do translation in your next examinations. So keep this in mind. These are our valuable suggestions for you. We have tried in this class to help you how you attend this translation question, because this is an important part of your OCS English paper. Okay. So I hope this class will be appreciated by all of you. You will learn something. This is our objective. Okay. So let us start the translation. Okay. First is Vidisha Vishwas kari parnathila. You must have done it. Okay. तुम एटा करि पारथिबो. कोन करथिबो तारे तुमे एटा Vidisha एंति करथिबो बोदे. Vidisha could not believe एंती करी छाड़ देइथिबो मोस्ट ऑफ यू. जदि करिछ तापर तो भलो कथा. जे करिछ तापर लिखिछ तापर किछ मिसिंग रहउची बिकॉज़ बिलीव ता ट्रांजिटिव सेंस रे हबो. इंट्रांजिटिव सेंस रे आई कैंट बिलीव व्हाट. आई कैंट बिलीव हर. आई कैंट बिलीव यू. आई कैंट बिलीव इन गॉड. That is a transitive verb. So it will take an reflexive format. Vidisha could not believe herself. Question कौन अछि? विदिशा विश्वास करि परनतला. कहा को विश्वास करि परनतला विदिशा? निजकु. तो निजकु टा इम्प्लाइड अछि. से इम्प्लाइड सेंस ता तो माने प्रतिको तो लेखा इन सेठी. सो सेटा मु कहउतली कि मल्ला चाउल मल्ला मनीष. That is the two different things. Okay. तो ये अनुसार विदिशा विश्वास करि परनतला. विदिशा could not believe. तू बिलीव लेखि छाड़तिबु ताल भूल हे गेला. से मार्क काटिबो जेंटेले. विदिशा could not believe herself because believe is a सकर्मक क्रिया. यदि ओडिया रे कहबु कह सकर्मक transitive that will be incomplete without an object. So गोटे मार्क तो पाइलु कि नहीं? गोटे मार्क पाइबु कि 2 मार्क बोध पडुची 20 टका केतरा अछि. 2 मार्क पाइलु बेकार रे 2 मार्क हरैलु. कहना तू कंप्लीट तू पढ़िले भी लागियो तते. विदिशा कुड नॉट बिलीव इनकम्प्लीट लागुनी सेंटेंस का. ओके. सो विदिशा कुड नॉट बिलीव हरसेल्फ. तापर देखे एमिति गोटाए अप्रत्याशित परिवर्तन जे ता जीवन रे संभव होई परिबो संपूर्ण कल्पना बहिभूत थला तार. इंग्लिश रे टिके उल्टा. ओडिया लोक टिके बुलेई कहत. इंग्लिश लोक सीधा कहिबे. तू कहलु कोन ना एमिति गोटी अप्रत्याशित जीवन परिवर्तन जेता जीवन रे संभव होई परिबो संपूर्ण कल्पना बहिभूत थिला. मेन क्लॉज किए कह? मेन क्लॉज किए कह? एमसी किए और एससी किए? एनसी आकु नबु. एनसी एटा कागु नबु सबऑर्डिनेट क्लॉज. एससी को क्लॉज हो सेटा एटी ग्रामर पढा हबनी. एटा तो हमें ट्रांसलेशन करियो. जे मो बापा घर को फेरी थिले. जे मो बापा काली घर को फेरी थिले यह सत्य कथा. दैट माय फादर रिटर्न्ड होम यस्टरडे इज ए फैक्ट. तो कोड रहला दैट मेन वर्ब के रहला इज ए फैक्ट. इट इज ए फैक्ट. तो एटा सेम ते आरंभ करियो पड़िबो. ओके. सो दैट इज दैट सच एन अनएक्सपेक्टेड थिंग दैट आई हैव डन. Let us first write the question. That such
an unexpected, okay, unexpected change would be possible okay जगह बटी in her life, okay, in her life ता जीवन रे comma was beyond her imagination. किछि अधिका वर्ड अलगा वर्ड किछि भाबी कि इमेजिनेशन और फैंसी एगुरा किछि यूज करिया दरकार नहीं. straight translation, straight mark. Look at the sentence carefully. एमिति गोटाए अप्रत्याशित परिवर्तन जे ता जीवन रे संभव होई पारिबो संपूर्ण कल्पना बहिर्भूत थिला तार. It was beyond his, be completely beyond, completely लिखिछि ना नहीं रे, it was completely, sorry, completely space delani, completely beyond his imagination. Completely, is it visible to all of you? Yes, that such an unexpected change would be possible in her life was completely beyond her imagination. हेलानी एटा हबो संपूर्ण कल्पना बहिर्भूत थिला. सो मेन क्लॉज को धरिया पड़ियो. तापरे आ भितरे को वर्ड ता कहो जोटा हमें जानि नै इंग्लिश जेते हमें वी आर प्रिपेयरिंग फॉर हायर एग्जामिनेशंस. तो आज ए कॉमन सेंस वी मस्ट हैव दिस आइडिया अबाउट दैट. कल्पना बहिर्भूत बियॉन्ड इमेजिनेशन. इट इज बियॉन्ड माय इमेजिनेशन. आउट ऑफ इमेजिनेशन नहीं. आउट ऑफ इमेजिनेशन समथिंग इज प्रोड्यूस्ड. द पोएट produces or poet wrote a poem out of his imagination. So out of imagination, but beyond my imagination. Bahirbhuta, beyond. Bahirbhuta means not within the area. Bahirbhuta. Okay, so that was the meaning there. Got it? Second sentence. Now third sentence. गतानुगतिक भावरे फॉर्म टिकु पूरण करी रेजिस्ट्री डाकरे पठाई देवा परे से भूली जाइतिला. मेन क्लॉज धवाग. मेन क्लॉज टा द सेतिकी न धरले आमे सेति पे से ट्रांसलेशन को करि परिबानी के. वी कांट डू द ट्रांसलेशन अनलेस वी लोकेट द व्हाट मेन क्लॉज. इति कोन से कला कह से भूली जाइतिला रे. से भूली जाइतिला वाला मेन जिंस से भूली जाइतिला. फास्ट से कोन भूलतिला नेक्स्ट थिंग. फास्ट कहया को चाहू जे मु भूली जाइतिली. से भूली जाइतिला. कोन भूल जाइतिला ताको पचारले कहिबो. लिखिछि भी से कोन भूल जाइतिला. गतानुगतिक भावरे कन्वेंशनली स्टेरियोटिपिकली. गतानुगतिक मीन्स एज पर द प्रॉपर फॉर्मेट. जेंती फॉर्म पूर्ण हुए गतानुगतिक भावरे फॉर्म टू पूर्ण करी रजिस्ट्री डाकरे से बोली ताल कोन अब से भूली जाइतिला. एटा तो विदिशा कथा तेनु सी हबो. एटा हम सब हर लिखिछे. फास्ट that such an unexpected change would be possible in her life was completely beyond her. Then she forgot कहू कि forgot हेले गोटे जिंस तू टेम्पररी पे बुझिबू भूलिबू. forget, I forgot to carry my key, I forgot to bring my purse, I forgot to call you. Temporary occasion, but she was oblivious. She was oblivious of it that she was oblivious of it. Sorry, oblivious it or it. Sorry, not after. It is after. Sorry, after sending the form लिखुची sending the form through कौतर पटेला through registry post
registry post कौन करिकी पठेला डांगेल रहइबो सेठी डांगेलटा दरकार सेठी कारण फॉर्म टी को पूर्ण करी रजिस्ट्री पठेला रजिस्ट्री पोस्ट हम लिखिले having filled it in having filled in it fill in the form filled in it conventionally जोटा मो माइंड रे आछि मु तुमको एटा शेयर करछि सो दैट इज कन्वेंशनल तो फास्ट से कौन कहला गतानुगतिक भावरे फास्ट कहला से ओडिया रे ओके सो फास्ट कहला ओडिया रे कौन गतानुगतिक भावरे फॉर्म टी पूर्ण करी आमे लास्ट रे लिखिले गतानुगतिक भावरे लास्ट रे हम लिखिले गतानुगतिक भावरे सो शी वाज ओब्लिवियस ऑफ इट आफ्टर she was oblivious it after sending the form through registry post having filled in having pore v3 having filled in it filled it haboni fill the form the form was filled in it conventionally देखो तो ओडिया रे से जोटा आगे रे कहला हम इंग्रजी रे ताको पछरे कहू बुझी पारछ कि नहीं तो सेटा सब क्षेत्र में से हम ओके तो सब क्षेत्र में हमें देखिबा सेटा ठीक कौन से मीनिंग आसु गॉट इट गतानुगतिक भाव में फॉर्म टी पूर्ण करी रजिस्ट्री डाकरे से पठाई भूली जाइथिला ओके प्लीज टेक द नोट ऑफ द थर्ड सेंटेंस ओके नेक्स्ट किए जानिथिला अंजुळे सुख अप्रत्याशित भाव में अजाड़ी पड़ो ता परिणत कहानी रे सी फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर विल नॉट चेंज द मीनिंग चेंज द सेंटेंस सी जेमती लिखी आम सेमती लिखा पड़ो आम मन इच्छा आम ट्विस्ट कर कैन नॉट ट्विस्ट इट दैट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल टू बी फॉलोड इन ट्रांसलेशन ओके सो यू हैव टू चेक इट फर्स्ट ओके मुझे ए दुटा को स्क्रैप कर दूची टिके क्लमजी हो जिवो किए जानिथिला अंजुळे सुख अजाड़ी होई पड़िबो ता पणता कानी रे किए जानिथिला तो तुम स्टार्ट से हु न्यू दैट न्यू इज फॉलोड बाय दैट हु न्यू दैट ए हैंडफुल ऑफ यस ए हैंडफुल ऑफ ओके दैट इज अंजुळे सुख ऑन अप्रत्याशित अंजुळे सुख ओके अंजुळे सुख अप्रत्याशित भाव में ओके अच्छा सो हु न्यू दैट ए हैंडफुल ऑफ प्लेजर लिखि परिबा हैंडफुल ऑफ प्लेजर और ब्लिसफुलनेस प्लेजर ब्लिस टा भी परिबो ब्लिस और हैप्पीनेस जहाँ लिखि परिबो जहाँ मने पड़िबो तुमरो ओके हु न्यू दैट a handful of pleasure, bliss or happiness would sip sip jodi padiba sip sip would sip unpredictably by unexpectedly like very unexpectedly into her skirt एटा तो जानि नथि बोली से लिखि लेती स्कर्ट into her skirt पणत कानी हला into her skirt न सेटा लिखिबो सेटा मन पड़िया दरकार ता पे की सॉल्यूशन नै into her skirt हला into her that means outer देखे who knew that a handful of bliss is a noun blissful adjective blissfulness be now he period we just so who knew that a handful of pleasure a handful of bliss a handful of happiness would seep unexpectedly into her into माने कानी रो किछि एरिया अछि आबद्धता कानी रे बांधिबो ना कानी रे कोनती न बांधी की जिंस आनी परिबो तो बांधिने माने सेटा कवर अप ला तने into preposition of direction अछि direction preposition अछि into the skirt not in the skirt into seep into the skirt
Okay, then who knew that a handful of pleasure or bliss, my suggestion is use bliss, very good word, bliss would seep unexpectedly into her skirt. Got it? Are you convinced? I hope you are convinced. Have your constructive suggestion if you find anything confusing. Okay, till I am trying my best to satisfy your person. Okay, now next thing. दुख सबु आखिरु लुह होई झरी गला बेले बो आश्वासना देउतला मेन क्लॉज. वेल, सो क्वेश्चन नंबर 5. एजाबत घटी जाइतिबा घटना सबुकु भुलाई देबो क्षणिक पई. किए भुलाइबो को घटना खाली छाड़ दे. किए भुलाइबो ए जो आंजुलाय सुख तार भुलेब कोडा अप्रत्याशित भाव में भुलेब क्या ना तार जोटा सबको भुलाई देव. तो ये जेतु सब्जेक्ट मागुची गोटे किसी आम कौन लिखा ये एजाबत घटी जाइतिबा एजाबत इट. सो इट वुड भुलाई देव कंपलसरी. इट वुड हाइड फॉर ए व्हाइल किछि क्षण पाई. फॉर ए व्हाइल किछि क्षण पाई. इट कुड हाइड फॉर ए व्हाइल ऑल दैट had happened, just let me write first, happened so far. All that had happened so far. Kindly look at the question sentence. एजाबत घटी जाइतिबा घटना सबको भुलाई देव क्षणिक पाई. इट वुड हाइड. व्हाट वुड हाइड? से जो सुख लुचाई देव. इट वुड हाइड, but that is भुलाई देव. You can write also it would forget, because the thing would hide it. लुचाई देव also answer होची. It can write also forget for a while. It would forget for a while, or better word is hide, because the that happiness से सुखटा किछि क्षण पाई से जिंस को लुचाई देव. तार तो से दुखटा रहिबो जहाँ घटी जाइता जीवन रे सेटा रहिबो, किंतु से जो सुख से पाइला सेटा किछि क्षण पाई कोन करिवो ताको लुचाई देव. So I think it would be better to write that it would hide or forget for a while, that is all that had happened so far. So I have used hide. Better to use hide. Got it? So एजाबत घटी जाइतिबा घटना सबु it would hide for a while all that had happened so far. ए पर्यंत. Now next. दुख सबु आखिरु लुह होई झरी गला बेले बो आश्वासन देउथला सबु बेले. So एटी मेन क्लॉज की बो आश्वासन देउथला. So mother, or you can write my mother also. Mother was always comforting her. Okay, so that is mother was always comforting her while all her sorrow shed as tears from her eyes. दुख सबु आखिरु लो होई जरीगला बेले बो आश्वासना देउथला सबुले. मदर वाज always it can be used in progressive format. Suppose my cycle is always giving me troubles. तो इटा हुए always टा usually frequency adverb टा, that means every time, sometimes no, every time. So that is called the mother was always comforting her. Solacing भी परिबो. Solace, solacing, solacing.
So better to use comforting her while all her sorrow said. Said or past tense said. Because it past tense lagich. Said no. Said. Okay, said as tears from her eyes. Got it? Dukha sabu. All her sorrow said as tears from her eyes. So it is a more akhiyo likhiyo. Amme tak imply kariyo padibo her eyes. From eyes or from her eyes. Okay? That is the things. Got it? Okay, please take a note of it. Okay, we shall go to next thing. Next thing is कहूला माने माँ कहूला ये कहूला माने से माँ को कंटिन्यू करछि से जो माँ को विषय को माँ कहूला तो सी लिखला कहूला हमें मदर से लिखे पड़ो माँ रे ये से का को डाकुछि माँ रे डाकुछि से झियो को डाकुछि माँ रे तो तू से लिखिबो कि मदर. So a child will address her mother, but a mother will not ask her child as mother. Can it be possible? It is not possible. So say answer हमको इटा affectionate address इटा affectionate address. Okay, affectionately से address कुछ माँ रे बाबा रे जोड़ा मोरो डाकन दी day to day घरे तो सेटा से use कुछ तो इट कौन होगा ना mother said. You can write here my dear or my child. You can write here my child भी ही परिवो my child. एटा कौन लखी जी से कौन कोटेशन रे सिंगल कोट रे रखी हम सिंगल कोट रे रखिया ताकू. ओके माय चाइल्ड और माय डियर मारे मनुष्य जीवन रे दुख सुख ठीक राति दिन गई तो दैट इज हैप्पीनेस दुख एंड सुख सरो एंड हैप्पीनेस sorrow and happiness is like day and night. It's like day and night. So sorrow and happiness, that is in life. Sorrow and happiness in life. My child or my dear, sorrow and happiness in life is like day and night. That's enough. It's like day and night each. Ramo is as smart as I. Tamana I am. So am is hidden, am is implied, don't write. So here, happiness is like day and night. Sorrow and happiness in life is like day and night each. Jahar jemti dino rati ase santi sukho dukha artha one comes after another. In this way you can do that, okay? So yes, my dear, happiness and sorrow comes in life like sorrow, the night and day. Okay? Now, दिने ना दिने राति पाई सूर्योदय हबो से बहुत तरह हम देखिचे बहुत तापरे हमरो करा जाईची जंती सन विल राइज कथाटी कहनी सूर्योदय हबो सो जहा कहिची से करे पड़े सन विल राइज. ओके one day there will be sunrise. There will be sunrise. Okay? Rati pahi after the dawn. After the dawn. After the dawn, not after the night set. That is a wrong English. Rati pahi mane after the dawn. Dawn pore surya sunrise हुए तापरे दिन हुए. So say the last part of the night. So dawn after the dawn. One day there will be sunrise after the dawn. Tapre you will. Ita achi kono. Ita gote ame gote divide kar dechu. Acha. Dine rati pai suryoday hobo. One day there will be sunrise after the dawn. You cannot change it. Somewhere some students have told me that sir I have written that sun will set or sun will rise after the night one day. That is completely wrong. Okay, that is the exact thing. So one day there will be sunrise after the dawn.
दैट मीन्स से तार कौन कहूँ अलग कथा कि जहाँ मीनिंग अच्छी से अनुसार करियो ओके तू बड़ होई निज गोड़े निजे ठिया ओके यू विल दैट इज यू विल स्टैंड ऑन योर 2 feet you will stand एटा एमती 2 feet हम stand on your 2 feet एटा गोटे फ्रेज टा stand on 2 feet अर्थात बड़ हवा बा स्वावलंबी हेबा बा किछि भलो लाइफ रे भलो सेटल हवा सेटा कोन stand on one's that is stand on your not you that is stand on your 2 feet when you grow up when you grow up when you grow up बड़ होई when you grow up grown ups हम कहू grown up बड़ पिला so when you grow up to बड़ होई निज गोड़े निज you will कना से फ्यूचर फोरकास्ट करछि so that is in future form future fact हिसाब रे रहउछि तो बड़ होई निज गोड़े निजे ठिया हबो so you will stand on your 2 feet yes stand on 2 feet when you grow up got it that is question number एटा सरजै छ हमर सब that is all over okay so that is 6 7 8 9 okay 9 got it now come to the next point next sentence मु मानुछि प्रकृति रो नियम अनुसार सी द हु इज सेइंग हियर की कहि चलछि बर्तमान मा कहउछि एटी मा कोटेशन चलछि एटी मा कहउछि मा रो देखुथिबो जो पैसेज रे अछि मु देखिथिबो तुमे कि कोटेशन सेटु आरंभ होई कि सरिछि तापरे एठु से झियो कहउछि विदिशा कहउछि तो सेटा से जाय रहिछि वी हैव ए डबल कोट हियर ओके मु मानुछि प्रकृति रो नियम अनुसार दिन और राति भितरे व्यवधान को सहज रे मापी हेउतिले मध्य मनीष जीवन रे केबे दुख आसे पुणी केबे आसे सुख सहज रे अनुमान करिवे ओके एटा फ्लैट सेंटेंस अछि आई एडमिट सॉरी I admit so एटा मु एमिति ताकू करिछि I admit मु बड़ बड़ लिखुछि ताकू लिबे दवा देखा माने I admit okay I admit तो से कहउछि कोन प्रकृति रो नियम अनुसार दिन और राति भितर व्यवधान को सहज रे मापी हि जाउतिले मध्य मनीष जीवन रे केबे दुख आसे पुणी केबे सुख आसे सहज रे अनुमान करी हुएनी तो इटा हमें प्रथम गोटे दबा कंजक्शन whereas जेमिति की whereas the distance between day and night the distance between day and night एटा मु एठी लिखुची कारण स्पेस नहीं प्लीज consider this that between day and night can easily be measured by nature's law or laws of nature भी लिखी होगा nature's law can be measured by nature's law comma it cannot be easily foreseen पूर्वर देखिबा foreseen let me first complete the sentence then we will analyze foreseen when agony visits life or happiness
dots. Just complete the sentence. Now analyze it first. It's the core sentence. I admit, whereas the distance between day and night can be easily measured by nature's law. कारण राति दिन सरुची आम जानूँ राति हूँ दैट इज नेचर्स लॉ से कहूँ नेचर्स लॉ टा दिन राति भितर व्यवधान को मापी दब दिनटा केते घंटा रातिटा केते घंटा शीत दिन कमी जाउची खरा दिन बढ़ी जाउची सो हाउ कुड वी नो इट बिकॉज ऑफ द सेटिंग ऑफ द सन द डे चेंजेस एंड नाइट कम्स सो इजीली वी अंडरस्टैंड बट सो सेटा लिखा हला जे व्हेयर एज द डिस्टेंस बिटवीन डे एंड नाइट कैन इजीली बी मेजर्ड बाय नेचर्स लॉ इट कैन नॉट बी इजीली फोरसीन when agony visits life केते बड़े दुख जीवन रे आसे और happiness does means happiness visits so it repeat habon happiness does ready agony mu lekhi deji you can write sorrow or pathos you can write anything that is what is not a problem pathos lekhi habo no sorrow happiness dita related word okay sorrowfulness no sorrow when sorrow visits life or happiness does केते बड़े दुख आसीबो और केते बड़े सुख आसीबो एटा सहजरे अनुमान करी हेबो नाही कैन नॉट बी इजीली फोरसीन अनुमान न को करछ दैट इज सहजरे अनुमान ताल फोरसीन जगह रे तुमे कैन नॉट बी एंटीसिपेटेड इजीली एंटीसिपेटेड लिख परिबो फोरसीन भी गोटे टाइप रो एंटीसिपेशन फोरसी माने आगो को देखिबा एंटीसिपेट भी से आगो को देखिबा I anticipate the result by next week. तार तो मु आगु को next week रे result बाहरी बोली कहूची भाबुची. So anticipated भी ही पड़ी. Better use you are whatever you are comfortable at you can use it. Okay. So that is the long sentence for this one. For this one. Okay. This sentence by it. I admit whereas the distance between day and night can easily be measured by nature's law, it cannot be easily anticipated when agony visits life or happiness does. Got it? Now comes to the next sentence. Well, the next sentence केते अबा पाठ पढितला बो कोन एटी मार्क करियर अछि देखि परछु तो कोन मार्क करिवो एक्सक्लेमेशन सेट द सेंटेंस दरला सेठी सेंटेंस रहिला सेठी ही जानि परियो जने कंफर्टेबली कोन हबो हाउ लिटरेट माय मदर वाज हाउ एजुकेटेड माय मदर वाज हाउ literate my mother was not was my mother was exclamatory sentence रे सब बेले सब्जेक्ट इन्वर्सन स्टेज रहिबो अर्थात लास्ट रहिबो हाउ लिटरेट my mother was केते बा पाठ पढितला कोन सेमति केते अब्बा पाठ देखो केनतिटा अब्बा गुड लिखले आपण कोन सेटा हबनी हाउ केते अब्बा हाउ पाठ पढितला हाउ लिटरेट my mother एजुकेटेड भी लिखियो बट इटी जेतु से सप्तम श्रेणी कथा कहिची एजुकेटेड टर्म न लिखिकी हमें लिटरेट लिखियोटा बेटर हाउ लिटरेट माय मदर वाज एक्सक्लेमेशन तो मो कहया कथा होची एक्सक्लेमेशन हमें बदलै परिबा की द आंसर इज बिग नो नो नेवर हमें बदलै पारे कारण से ट्रांसलेशन करियो तल काहे देछ तो हमें मनु को जस्ट लिख परिबा हमें ताको एग्जैक्टली ट्रांसलेट करियो पड़िबो बट विथ इन इंग्लिश लैंग्वेज ओके इन इंग्लिश लैंग्वेज दैट इज द थिंग्स सप्तम श्रेणी पास करिया परे ता पाठरे डोरी बंधा हैला तू भाबुतबु डोरी बंधा हैला कहि कि तू रोप बांधिबु रोप वाज बाउंड इन हिज एजुकेशन आफ्टर 7th ग्रेड सेटा नै से डोरी बंधार लेक्सिकल मीनिंग ता ओडिया रे कोन गोटे जिंस संपूर्ण भाबरे शेष हिज आउ केबे से जिंस आसीबो नाही सेहिरो सूचना दिए से डोरी बंधा ओके मु तो कोन करछि ओके ओके हर education came to a dead end come to dead end माने complete बा finished for good जोटा सब दिन पाई सरी जाए complete the old law came to a dead end अर्थात से old law टा संपूर्ण भाବରେ abolish हे गेला तो her education came to a dead end ता पाठ पढारे डोरी बंधा हितला केबे सप्तम श्रेणी रे पास करिबा परे after she had passed her 7th
ग्रेड बा 7th स्टैंडर्ड भी लिखी हम कि असुविधा नहीं स्टैंडर्ड भी से how literate my mother was her education came to a dead end after she had passed her 7th grade आप आउ किसी टर्म थाई पारे but I find this very suitable you can have your own if you like but this is the things don't think that डोरी बंधा हबो माने that binding with a rope डोरी बंधा हबो माने ओडिया रे रूढ़ीर अर्थ होउची गोटे जिंस रे संपूर्ण पूर्णछेद पड़िबा you can write okay there was a dead full stop to our education but that टिके completely टिके अलग हाई जीवो त हमें एटा व्यवहार करवाटा ठीक but it is up to you to decide okay don't worry about that so that is kete haba but got it okay came to an end dead after she had passed her 7th grade got it now come to the next question we should erase it first कोठू शिखिथिला से एमिति कहिबा कथा कहिबार भंगी where she could learn where she could learn where she could learn such a manner of speaking or such a style of speaking talking no speaking style of speaking style of manner of speaking manner you can use better word I use often manner of speaking his manner of speaking is not good not manner of speech you can also write speaking जगह speech भी लिखे हो speech don't be confused okay so I'm suggesting different ways as far as my knowledge is concerned that may be other things but जति की हमें जानी छे सेति की शेयर करिबा एवं जेंति तुम मन पई सेटा उपादेय हबो आगामी परीक्षा रे जेंति सेटा हेल्प करिवो केमति तुमे ट्रांसलेशन को अटेंड करि परिबो ओके दिस इज आवर इंडिया बियर सो केउंटु सिकिला एमिति कहि कथा कहिबार ओके यस सो वेयर शी कुड लर्न सच ए स्टाइल ऑफ स्पीकिंग ओके वेयर शी कुड लर्न सच ए स्टाइल ऑफ स्पीकिंग और मैनर ऑफ स्पीच you can add also okay where she could learn such a manner of speech you can add also that is implied from where she could learn from so complete sentence is where she could learn from such a manner of speech or such a style of speaking you can add okay now केते सहजरे निज चिंताधारा को अन्य निकटरे सूर्यालोक परि स्पष्ट करिवार पारदर्शिता एडाला मेन क्लॉज तू कहबो मेन क्लॉज रे सब्जेक्ट काई केमती मु करबी कह जेतो सब्जेक्ट नटे के आसे रे सब्जेक्ट मेन क्लॉज रे जेतो सब्जेक्ट नथिबो धर बहिटी पढ़िबा पई सहज ताल तू को करबी तू कह कहली बहिटी पढ़िबा पई सहज इंग्लिश कोन कह तू को कहि बुक इज इजी टू रीड नो इट इज इजी टू रीड द बुक इज इजी टू बी रेड हे पारे आ बुक केंति रीड करिवो बुक तो निजे बुक बहिटा पढ़ा हबो ना बहि को पढ़िवो मीनिंग जेंतेल बदलिवो सो बहिटी पढ़िबा पई सहज हम सेठी कोन आनचू डमी सब्जेक्ट डमी कहंती डमी डी यू एम एम वाई डमी सब्जेक्ट ईट आनचू सेंति ईट आनी लगेबो इट इज द प्रोफिशिएंसी ओके सो यू कैन राइट दैट इट इज द प्रोफिशिएंसी इन it is a proficiency paradarshita proficiency excellence it is a proficiency in how one presents how one presents one's thought how one presents one's thought how one presents one's thought केंती सूर्यालोक परिस्पष्ट as clear as sunlight as clear as sunlight before others अन्य आगरे before others अन्य आगरे let us see the sentence again it is a proficiency in how one presents one's thoughts
thoughts as clear as sunlight before others, or it is a proficiency in how one presents before others one's thought as clear as sunlight before others जो phrase टाको हमें verb पाखे रखी पारिबा, but I have used it at the end, but remember these are two patterns are right, don't worry about that. Okay, so answer is that it is a proficiency in how one presents one's thoughts as clear as sunlight before others. Sujjaloko pari. Okay, that's done. The question number, that is kete sahajare nijo chintar sujal eita gala paradarshita. Now chintadhara la thoughts अन्य निकटरे before others. Okay, spashto as clear as, that is compare positive degree अछि. तथापि ताकू असंभव दुखरे अविचलित रहिबार देखि से आश्चर्य होइछि. तथापि ताकू अविचलित दुखरे सॉरी असंभव दुखरे अविचलित रहिबार किए रहिछि अविचलित काहाकू देखिछि किए कह. तथापि ताकू असंभव दुखरे अविचलित रहिबार देखि से आश्चर्य होइछि किए मा रहिछि अविचलित झियो देखिछि. तो तथापि इंग्लिश कोन नेवरदलेस. Nevertheless, he is astonished too. Nevertheless, तथापि कमा रहेगा. Nevertheless, he is astonished. She is astonished to see her, or sorry, to watch her. देखिबा टी watch constancy रहिबाटी to watch her. Okay, to watch her लिखती हो. हाँ, watch her steadfast, 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 अविचलित, steadfast. Okay, steadfast in the असंभव दुख impossible सरनु. असंभव जोटा सब जगह असंभव कथा हेले इम्पॉसिबल मैटर हो पारे. असंभव दुख टी माने असह्य दुख, इमेंस सरो. सो स्टेडफास्ट in the midst of midst of immense sorrow, immense, immense असंभव दुख, immense sorrow by immense suffering भी ही परिवो. असंभव दुख suffering भी पारिबो. So nevertheless he is astonished to watch her steadfast in the midst of immense sorrow. ताकू असंभव दुख रे अविचलित देखिछि. ओके, सो दैट इज कि देखिछि एवं कोन हेछि. एटा तो डायरेक्ट फ्लैट सेंटेंस ना, खाली कंजक्शन आगरे आरंभ होइछि. एवं nevertheless is a conjunction used in compound sentence. Nevertheless, in spite of, or से जो अछि हमर or else, otherwise कहिछि मु, not only but also, either or, neither nor, both and, एगुरा सब कंपाउंड सेंटेंस रे. एटा कंपाउंड सेंटेंस. ओके, nevertheless जेतबेले फास्ट यूज हुए, otherwise हो, nevertheless हो, they take a comma after it. This is compulsory. Okay, that is the things. First, then last sentence for this class. आखिर लुह नपोचणु ओट फांखरे अकृत्रिम हस टिकिए फुटाई देवार कला से केउटु हासिल करिथिला के जानी. Okay, so that is the कोउटु हासिल करिथिला के जानी सेटा आरंभ फर्स्ट. कोउटु हासिल करिथिला के जानी. Okay, so एटा टिके मु एठी लिखुची, एटा जेतु तळे लिखियो पड़ो. एटा that is the things. Okay, where she could have acquired, sorry, where she could have acquired, where she could have acquired, कौन सीखी बसिए, कौन सीखिला, कला, फर्स्ट कला. ओके, यस, the art of smiling in the lip gap, से ओठ फांक लिखी आम कहीं लिखा पार्टी रे बेली, जहाँ लिखी आम से लिखे in the lip gap. Okay, yes, in the lip gap,
before এটা GAP, sorry, it is visible in GAP before କଣ କରୁଥିଲା ସେ before ଆଖିରୁ ଲୁହ ନ ପୋଛୁଣୁ before wiping tears from her eyes. That is implied, don't worry. Look at the last sentence of your translation, where she could have acquired. केउटु शिखिथिला के जानी? Have acquired केउटु शिखिथाई पारे? The art of smiling in the lip gap. Okay, so that is napochano or kritima. That is before or while. You can also add there while in the lip gap. While wiping tears, you can add. Before ही परे while भी appropriate है वो while wiping tears from our eyes. Okay, so this is the last attempt question in your exam. I think this is a complete passage. Go through all the sentence. Okay, keep it noted. Any doubt, anything, you can contact us. Okay, we shall discuss more how to deal with translation. Thank you very much for this class.